Hello my dear friends, welcome to BISWAL'S chemistry. Myself BISWAL, and in this lecture I am going to discuss about the next topic of the chapter atomic structure, that is the rest part of Rutherford's atomic model. Okay, and in the last class I have already discussed about the part 1 of Rutherford's atomic model, and in this lecture I am going to discuss about the part 2 of Rutherford's atomic model. ताले lecture में discussion करेबी Rutherford का जो atomic model लो बड़ी जाइथिबा आ किछि postulates. Okay, चलो देखिबा नेक्स्ट पोस्टुलेट लिखिबा रदरफोर्ड कर. ओके, राइट डाउन गाइस. द रेडियस of the nucleus. Okay, the radius of the nucleus of an atom, the radius of the nucleus of an atom can be calculated by using the formula, can be calculated by using the formula. Okay, formula R is equal to R naught into a to the power 1 by 3, where R is equal to radius of the nucleus, okay, where R naught is equal to a constant, R naught has got a constant, jar value वाला 4 by 3 into 10 to the power minus 13 centimeter. Okay, अब 8 तुम मैंने ऑलरेडी जानी छ 8 हाउस तमर को नंबर मास नंबर. ओके, ताले रदरफोर्ड ए फार्मूलाटा देथिले कहले ए फार्मूला को तुम मैंने यूज करी की गोटे एटम भीतर थिबा तार जो न्यूक्लियस रो रेडियस को तुम मैंने गोटे सेकंड भीतर कैलकुलेट करी बाहर कर दे परिबो. ओके, केम ताको अप्लाई करा जाय बर्तमान चलो मोटे क्वेश्चन माध्यम रे ताको बुझौछि. ओके, सो राइट डाउन वन क्वेश्चन इज calculate the radius. Okay, calculate the radius of the nucleus of aluminium atom भीतर थिबा माने को सपोज एटा ला गोटे aluminium atom आ भीतर एटा तार न्यूक्लियस अछि. ए न्यूक्लियस रो रेडियस केते क्वेश्चन ने पचाछ. ओके, एटा गोटे को एटम तमरो एटा गोटे aluminium atom. ओके, aluminium atom भीतर थिबा न्यूक्लियस रो रेडियस केते तमन को पचाछि. त तमन जानि जो एडी फार्मूला लिखा आइछि लिखि दबा आगो. त तार आंसर होबो R is equal to आधा R ला कोन तमरो रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ना. त aluminium atom रो जो न्यूक्लियस अछि त रेडियस पचाछि ना. त R रो वैल्यू पचाछि ना. त R is equal to R naught. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R naught? 4 by 3 into 10 to the power minus 13 into अदा व्हाट इज A is the mass number. तमन जानि जो aluminium रो mass number होजी 27 ना. त फाइनली वी कैन राइट हियर 27 to the power 1 by 3 ना. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तले aluminium रो mass number ला तमर 27, त 27 to the power केते गेला तमर 1 by 3 means 27 रो रूट क्यूब बाहर करिबा. ओके, तले फाइनली वी कैन राइट हियर 4 by 3 into 10 to the power minus 13 into 27 रो 27 रो रूट क्यूब होला तमर 3. तले ये तमर कैंसिल आउ. तले आंसर आसी गेला हमर 4 into 10 to the power minus 13 सेंटीमीटर. ओके, तले फाइनली हम जानि गेले जो एल्युमिनियम रो जो न्यूक्लियस अछि त रेडियस रो वैल्यू तमर केता आसी गेला 4 into 10 to the power minus 13 सेंटीमीटर. ओके, त जानि परलो केम तमले फार्मूला यूज करियो बोली. ओके, सो गाइस प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. थैंक यू. नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट पोस्टुलेट. चलो नेक्स्ट पॉइंट. राइट डाउन गाइस. Next point, the number of alpha particles. Okay, the number of alpha particles scattered at any angle. Okay, at any angle
theta at any angle theta is inversely proportional to fourth to fourth power of sin theta by 2. Okay, so write down guys. Tale that is n is inversely proportional to sin fourth to the power theta by 2. Means it is deklo where n is equal to number of alpha particles. Okay, where n is equal to किछि नहीं, don't worry guys, जेपर कौशिक विश्वाल ठिया है so don't fear. Okay, where n is equal to number of alpha particles, where n is equal to number of alpha particles. तले ताको देखलो एडी तमर number of alpha particles और theta भितरे तमर एडी inversely रो साइन आसी गला ना, means number of alpha particles और theta भितरे तमर inversely proportional रो relationship आसी जाउची ना. तले finally we can write here or n is inversely proportional to theta. Okay, n is inversely proportional to theta. Okay, ए पॉइंट रो माने टिके भलो की बुझो. ओके, अच्छा वर्तमान मते गोटे कथा कुओ, ए पॉइंट रो माने टिके भलो की देखो. तमन जो नेथिलो ए जो गोल्ड फॉइल थिला, ए गोल्ड फॉइल भितरे तमन जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटर करिथिलो, तमन मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गुडा को सीधा सीधा पास करी की पळैथिला ना. ये कोनोसी कोण बनेथिले की कोनोसी एंगल बनेथिले की, ताले सेमानकर संख्या सेही अल्फा पार्टिकल गुडांकर संख्या होची अधिका, जे कि तमर थीटा रो वैल्यू केते बनौथिले ना 0 बनौथिले. मींस तमर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जदी बढ़ी जाउची ताले थीटा रो वैल्यू कमी जाउची ना. मींस जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो 99% तमर पास करी की पळै गेले से माने कोनोसी एंगल बनेले की बनेलेनी. मींस सेमानकर थीटा रो वैल्यू तमर पाखा पाखी केते तमर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू केते 0 ना. तमर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बढ़िले थीटा रो वैल्यू कमुची ना. आ तमन भीतर मु कहि दिली जे तमर 20000 रो 1 पार्टिकल तमर जो पाथ रे जाउतला सेही पाथ रिटर्न करी पळिया तुला ना. आ गोटे बड्ड एंगल बनौतला जोटे गेला 180 डिग्री ना. ता माने आकु मु लिखि दे परिबी जदी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बढ़िले थीटा कमुची ताले ताकु उल्टे की लिखि दे परिबी ताले नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स सेही मानकर कम जो मानकर एंगल होची कोन ना अधिका. आर माने होचे या तमर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बढ़िले तमर थीटा रो वैल्यू होबो कमिबो. मींस नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जदी कमिला तमर थीटा रो वैल्यू तमर कोन होबो ना बढ़िबो. ओके, so guys please take a screenshot. Thank you. Next देखिबा, next it is a very important point, the mindful देखिबो. okay, mindful देखिबो. नेक्स्ट पॉइंट होची डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल. देखिए वेरी इंपोर्टेंट, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट approach of alpha particles. Okay, distance of the closest approach of alpha particle. ए जिनसटा तमर केवल सही अल्फा पार्टिकल मानक पे एप्लीकेबल जो अल्फा पार्टिकल गुडा को तमर सीधा सीधा जाउतिले आ तमर सही पाथ रे रिटर्न बैक करतिले सेटा लिखि दवा टिके. आर माने कोन बुझेबी, बिल्कुल भी पेशेंस रखो, बिल्कुल भी माने धैर्य हरा होनी. ओके, तो चलो इट इज एप्लीकेबल, इट इज ओनली लिखि दवा, इट इज ओनली एप्लीकेबल for those alpha particles which are traveling straight towards the nucleus and
returned back and returned back in the same path and returned back in the same path ताले ए क्लोजेस्ट अप्रोच ता तमरा सेही अल्फा पार्टिकल मानक पई एप्लीकेबल जो अल्फा पार्टिकल गुडा को तमरा सीधा सीधा न्यूक्लियस आड़ को जाउतिले एवं सेम पाथ रे 180 डिग्री एंगल कर से कोन करतिले फिर यस्तले केवल सेही मानक पई तमरा डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ता तमरा एप्लीकेबल आर माने होची एया बुझो सपोज मोटे बुझिया पे चेष्टा कर तमानकु सपोज एटा हमर थिला गोटा एटम थिला एटा हमर कोन थिला एटम थिला एटम भीतर एटा तमर कोन थिला न्यूक्लियस थिला न्यूक्लियस रो चार्ज तमान जानि कोन ना पॉजिटिव ओके माने कर सपोज ए पॉइंट रू ए पॉइंट रो ना दे देली मु ए पॉइंट रू हमें अल्फा पार्टिकल को स्कैटरिंग कले ताले अल्फा पार्टिकल ले तमान जानि छ अल्फा पार्टिकल हला तमर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ना पॉजिटिवली कोन चार्ज पार्टिकल ना ओके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ना ताले वर्तमान अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करा गला ताले अल्फा पार्टिकल तमर गला ओके अच्छा गला जाई कि तमर एई पॉइंट रे आसी कि रही गला एई पॉइंट रे तमर कोन हे गला रही गला ए पॉइंट रो नाम दे देली कोन बी दे देली ए पॉइंट रो नाम कोन दे देली बी ए बी पॉइंट से आसी कोन हे गला रही गला स्टॉप हे गला ओके काइना तमन जानि तो न्यूक्लियस रो चार्ज हला पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल गुडा कर चार्ज हला पॉजिटिव ताले पॉजिटिव पॉजिटिव भीतर कोन होतिबो रिपल्सन होतिबो एटा डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच रो माने हला तमन अल्फा पार्टिकल टा गला न्यूक्लियस थारु केते क्लोज हेगी से तमर रिटर्न बैक करी पळे आसला बस हमको एई जो क्लोजेस्ट अप्रोच रो डिस्टेंस को हमको कैलकुलेट करी बाहर करिबा अछि ओके तमन अल्फा पार्टिकल मने करो अल्फा पार्टिकल गला न्यूक्लियस सहित हैंडशेक करिया पे से केते दूर रु फेरी की पळे आसला बा केते क्लोज रु से अप्रोच करिया पे जाई न्यूक्लियस को हैंडशेक करिया पे जाई न्यूक्लियस सहित मीन से न्यूक्लियस पाखु केते क्लोज हेगी फेरी की पळे आसला बस हमको सही डिस्टेंस को कैलकुलेट करके बाहर करिबार अछि और सही डिस्टेंस तक हम माने कहूचे डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल बुझियो ना बुझोनी त माने एई जगह रु से तमर न्यूक्लियस थारु फेरी की पळी आछि माने मु कहि देली सपोज एउ टू एति के जो डिस्टेंस ता मु कहि देली आर मिनिमम केते मिनिमम आर मिनिमम ए डिस्टेंस हला आर मिनिमम त माने पॉइंट बी थारु न्यूक्लियस रो दूरता होइस तमर आर मिनिमम मींस एते की दूर रु से अप्रोच करी कि न्यूक्लियस को फेरी आछि ओके अब मु कहि देली ए पॉइंट थारु ए न्यूक्लियस रो डिस्टेंस होची तमर इंफिनिटी हला इंफिनिटी तुमको सारे इंफिनिटी केम देला अरे अल्फा पार्टिकल डाला बहुत छोटो ये छोटो अल्फा पार्टिकल छोटो पार्टिकल पई ए अल्फा पार्टिकल बहुत छोटो पास छोटो पार्टिकल पई तमर ए दूरताटा बहुत अधिका ताले सेही पई आर वैल्यू ला तमर कोन इंफिनिटी मते थर कुआ जो जातु चाली के अमेरिका पळा ताले मो पई अमेरिका रो दूरताटा इंफिनिटी ना इंफिनिटी नो मो सतर चाली के पळेबी अमेरिका ताले एग्जैक्टली सेया ताले अल्फा पार्टिकल डाला बहुत छोटो सेही पई एपर्यंत तार दूरता को हम माने कोन करूचे ना इंफिनिटी बोली धरुचे ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट ओके चलो ताले फाइनली हमको एई पॉइंट रु केते से क्लोजेस्ट अप्रोच करके फेरी आसिला हमको एई आर वैल्यू टा हमको कैलकुलेट करके बाहर करिवार अछि ओके ताले सपोज चलो फर्स्ट पॉइंट ए रे ए अल्फा पार्टिकल रो मु बाहर करबी काइनेटिक एनर्जी केते बाहर करबी आ पार्टिकल एई सेही पॉइंट रे से अल्फा पार्टिकल रो पोटेंशियल एनर्जी केते मु बाहर करबी ओके ताले चलो ताले बर्तमान फाइनली मु बाहर कर दोउची ताले पॉइंट ए रे लिखि देली फॉर पॉइंट ए पाई बर्तमान बाहर कर देबी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल बा काइनेटिक एनर्जी at point A is equal to मान जान जो हाफ mv स्क्वायर ना हाफ v अल्फा m अल्फा v अल्फा रो स्क्वायर मींस काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला जान जो हाफ mv स्क्वायर हाफ लिखि देली m अल्फा ला अल्फा पार्टिकल रो मास केते v अल्फा ला अल्फा पार्टिकल ला तमरा केते वेलोसिटी रे जाउची सेटा ला तार v अल्फा ओके तार फाइनली ये लिख देली हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर बस एई पॉइंट रे वर्तमान मु बाहर करबी तार पोटेंशियल एनर्जी केते तार को एनर्जी केते पोटेंशियल एनर्जी केते ताले पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट कोन ना ए अच्छा तमन जान जो पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला हला k q1 q2 बाय r ना k q1 q2 बाय r ना तमन जान जो होयार k इटा हो तमर गोटे कांस्टेंट होयार एट लिखि दोजी होयार k is equal to कोटे कांस्टेंट जार वैल्यू हला 1 by 4 pi epsilon naught आ तार वैल्यू होजी 1 by 9 into 10 to the power 9 ओके 9 into 10 to the power 9 अब आर यूनिट हला हमर न्यूटन मीटर
कूलम टू द पावर -2 ओके न्यूटन मीटर कूलम टू द पावर -2 ओके न्यूटन मीटर कूलम टू द पावर -2 ए वैल्यू टाको मन रखियो वेरी वेरी इंपोर्टेंट वैल्यू ओके वेरी इंपोर्टेंट ओके चलो फाइनली एडी लिख देली k q1 q2 बाय r अच्छा वर्तमान मते गोटे कथा को पॉइंट a पाई ओके एडी r रो वैल्यू तमर केते इन्फिनिट ना ताको छाड़ ताको हम परे पकेबा ओके ताल फास्ट मिनट लिखि देली ए वैल्यू टाको लिखि देली चलो सेम बाहर करी पॉइंट b पाई तो चलो बाहर करिवा पॉइंट b पाई बाहर करिवा ओके चलो पॉइंट b पाई बाहर कर दबा काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट a इज इक्वल टू अच्छा देख लो तारी फार्मूला पके दबा हाफ m अल्फा v अल्फा रो स्क्वायर ओके वेरी इंपोर्टेंट एट पॉइंट b सॉरी एट पॉइंट b एटा b पॉइंट रे बाहर करते ना सेम बाहर कर दबा पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट b इज इक्वल टू चलो वैल्यू पके दबा k q1 q2 बाय r ना k q1 q2 बाय r ना ओके वेरी इंपोर्टेंट अच्छा वर्तमान k टा जानि जो गोटे कांस्टेंट जार वैल्यू हला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जार वैल्यू हला 1/9 * 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर सेंटीमीटर कूलम टू द पावर -2 ना आको जो ऊपर को नै जिबा त न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स सेंटीमीटर सॉरी कूलम रो कोन नै जिवो स्क्वायर नै जिवो ओके तले फाइनली एटा तमर पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट कोन तमर ना b ओके तले पॉइंट a रे वर्तमान मु काइनेटिक एनर्जी पाइली एति की पॉइंट b पई काइनेटिक एनर्जी वर्तमान पोटेंशियल एनर्जी पाइली केते मु ना एति की वर्तमान चलो सेमानकर वैल्यू को पके दबा गोटे लॉ को अप्लाई करी ओके तले चलो अरे स्क्रीनशॉट नहीं जाओ चलो चलो you can write here according to the law of conservation of energy according to the law of the conservation of energy okay according to the law of the conservation of energy total energy before repulsion is equal to total energy after repulsion okay repulsion means बुझार माने कोन हमर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहूजी हमर रिपल्शन पूर्वर एनर्जी हमर रिपल्शन परर एनर्जी सहित समान माने करे अल्फा पार्टिकल ता जाउची एडाला तमर न्यूक्लियस एमदी गला वर्तमान जाई जति स्पीड रे गला ता तो बाजिला पुनी सेति स्पीड रे बा सेति की एनर्जी रे से रिटर्न बैक कला ना माने करे हातटा गला बोर्ड सहित बाडे गेला पुनी सेति स्पीड रे पछुक परियाला ना ता माने बिफोर रिपल्शन रे एनर्जी जहा दिला आफ्टर रिपल्शन परे एनर्जी रो वैल्यू हमर शेयर होजी ना तो एग्जैक्टली टोटल एनर्जी बिफोर रिपल्शन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर रिपल्शन अच्छा मते कहला बिफोर एनर्जी रिपल्शन को जगह रहितला ना एट पॉइंट ए एना पॉइंट ए रे से जाउतला रिपल्शन हेइ नथिला त माने टोटल एनर्जी जानिया पय हेले बिफोर रिपल्शन ताले मु लिखि दे परिबी टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू अच्छा हम रिपल्शन को जगह रहला ना बी पॉइंट रिपल्शन हला ताले आफ्टर रिपल्शन हमर को जगह रहिछि ना बी पॉइंट रे ताले बी पॉइंट रे एनर्जी वर्तमान मु लिखि दे परिबी टोटल एनर्जी एट पॉइंट व्हाट ना बी ओके ताले फाइनल चलो ए रो टोटल एनर्जी जाने पहले हमको काइनेटिक एनर्जी और तार पोटेंशियल एनर्जी दीटा को ऐड करिया पे पड़िबो ओके ताले फाइनली काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट कोन तमर ए ओके पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए is equal to total energy at B is equal to kinetic energy of B plus potential energy at point what B okay तले चलो वैल्यू पके दवा तले kinetic energy at point A तले वैल्यू पके दियो हाफ m अल्फा v अल्फा रो स्क्वायर प्लस एट जो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A अच्छा देखिलो चलो एटी पके दवा k लिखि देली Q1 Q2 भी लिखि देली Q1 Q2 भी लिखि देली अच्छा जो R जो लिखा है देखलो A पॉइंट रे R रो वैल्यू टा होजी केते इंफिनिटी ना ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट इंफिनिटी इज इक्वल टू चलो
काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी अच्छा तुम काइनेटिक एनर्जी रो फार्मूला हला हाफ mv स्क्वायर ना अच्छा बी पॉइंट रे तुम अल्फा पार्टिकल जाई कि रही जाउची ना मींस तार वेलोसिटी जगह जदि हम 0 पके दबा त तार काइनेटिक एनर्जी वैल्यू केते हे गला 0 हे गला ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी चलो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू k q1 q2 बाय एटी देखला r वैल्यू होची एति कि ना r मिनिमम ना ताले फाइनली वी कैन राइट हियर r मिनिमम आ तो मान जानो k रो वैल्यू वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तार वैल्यू वाला 1/9 * 10 टू द पावर 9 और यूनिट को ऊपर नै गले न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स कूलम रो केते जो पावर 2 हे जिवो ओके त जानि परलो चलो आकु लिभे दोजी कैलकुलेट करी बाहर करिवा तर फाइनली half m alpha v alpha square अच्छा समथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी रो वैल्यू वाला के तमरो 0 इज इक्वल टू ये तो 0 हे जाई छी ये तमरे गला k q1 q2 बाय व्हाट r मिनिमम ओके ताले फाइनली वी कैन राइट योर हाफ m alpha v alpha रो स्क्वायर इज इक्वल टू k q1 q2 बाय r मिनिमम बस आ गोटे क्रॉसिंग कर दियो ताले फाइनली r मिनिमम into m alpha v alpha square is equal to 2 into k q1 into q2 बस what is the value of r minimum is equal to finally पाई गले 2 k q1 q2 by m alpha v alpha square so this is the formula how you can calculate the value of r minimum okay the distance of the closest approach can be calculated by using the formula 2 k q1 q2 by m alpha v alpha रो square okay so guys please take a screenshot thank you next आउट के आगु जीवा आ गोटे पॉइंट रह गला दीटा पॉइंट लिखा चलो मु अपन न्यूमेरिकल करेबी डोंट वरी गाइस जदि थरे बुझी पारना वीडियो को 5 थर देखो न बुझिला पर्यंत लेखो आ मते कमेंट करो ओके कमेंट बॉक्स जाके कमेंट करो जदि किसी डाउट रह जाई छी ओके मु त सॉल्व करेबी नेक्स्ट देखिए the coulombic force of attraction between the nucleus and the revolving electron is cancelled due to the centrifugal force possessed by an electron okay due to the centrifugal force possessed by an electron आर माने होची या एटा होच तमरो न्यूक्लियस एटा तमरो होची गोटे ऑर्बिट जो ऑर्बिट रे तमरो किए बुलुची इलेक्ट्रॉन बुलुची अच्छा इलेक्ट्रॉन चार्ज जानिचो नेगेटिव न्यूक्लियस रो चार्ज जानिचो पॉजिटिव बस जो पॉजिटिव और नेगेटिव भीतर अट्रैक्शन होतबा ना बस ए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मु कोइ तमरो कोन coulombic force of attraction बा जोटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कहि परिबो ओके सेटा को मु कहूजी coulombic force of what attraction ओके coulombic force of attraction कहूजी ताल से कहूजी जो न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन भीतर थिबा को फोर्स एग्जिस्ट करूची ना coulombic force एग्जिस्ट करूची ओके ताल से coulombic force ता तमर कोन हे जाउची ना कैंसिल हे जाउची कोन पे ना जेहेतु इलेक्ट्रॉन रो को फोर्स अछि ना इलेक्ट्रॉन रो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अछि सेंट्रीफ्यूगल रो माने हला इलेक्ट्रॉन सेंटर आड को न आसी की सेंटर रो आउटवर्ड जिबा पई जो फोर्स लागुची सेटा को हमें कहू जे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स माने कर गोटे छोटिया टेका को गोटे सूतार बांधी के बुलौची जब से सूता छिड़ी जीवो ताले टेकाटा मो हाथ आड़ को आसीबो ना बाहर को पळेबो ना बाहर को पळेबो ताले मो खाता सूताटा छिड़ी गला परे सूताटा छिड़ी गला परे टेकाटा सेंटर आड़ को आसिला ना सेंटर रो आउटवर्ड पळेला ना सेंटर रो आउटवर्ड पळेला ताले सेही फोर्स को हम को फोर्स को जे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओके ताले जेहेतु इलेक्ट्रॉन हमर बुलुची
जदि बुलुची ताले 100% तारे को फोर्स क्रिएट होउची सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होउची आ जदि इलेक्ट्रॉन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होउची ता माने ये जो फोर्स रे भिडुची आ ये जो फोर्स रे तमर पदा को जिया पे चाहूची से फोर्स रे तमर कोन जाउची कैंसिल हो जाउची ओके त जेहेतु इलेक्ट्रॉन रो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अछि मीन से चाहूची सेंटर रो आउटवर्ड जिबा पे सेति पे न्यूक्लियस जो फोर्स ता पकोची इलेक्ट्रॉन ऊपर से फोर्स ता हमर कोन जाउची कैंसिल आउट हो जाउची सेटा को हम कहूचे कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ता हमर कोन जाउची कैंसिल हो जाउची काई पे कोन पे ना ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन चाहू सबले पदा को जिया पे मन कर म ठिया आइछ मते गोटे लोकटे याडू को भिडुची जति फोर्स रे आ गोटे लोकटे सेति फोर्स रे मते याडू को भिडुची ताले वर्तमान मते दीटांग फोर्स परस्पर को कैंसिल कर देबा ना ताले वर्तमान फाइनली मु क्वाड जीबी कांस्टेंटली गोटे जगह रही ओके तार आर माने होची एक्जेक्टली सेया ये तक जति फोर्स रे भिडुची ये सेति फोर्स रे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रे पदा को जिया पे चाहूची सेति पई आकर जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तांग भीतर कोन जाउची कैंसिल हो जाउची ओके आर यू गेटिंग माय पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट इज next point is atom is considered to be a mini planetary system in which the electrons revolve around the nucleus as the planets move around the sun okay सी हमर गोटे एटम गोटे छोट सोलार सिस्टम बोली कहिदिले गोटे छोट सौर जगत कहिदिले जो तरीके से न्यूक्लियस को हमर कहिदिले सी होची हमर सन बा सूर्य आ त चारि पाखे बुलुथिबा इलेक्ट्रॉन गुडा को से कोन कहिदिले ग्रह कहिदिले ओके तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एन एटम इज कंसीडर्ड टू बी ए मिनी प्लैनेटरी सिस्टम इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस as the planets move around the sun त गोटे छोट सौर जगत बोली कहिदिले बा छोट मिनी प्लैनेटरी सिस्टम बोली कहिदिले जो कि सूर्य को से कंपेयर करथिले न्यूक्लियस सहित आ त चारि पाखे बुलुथबा इलेक्ट्रॉन को से कंपेयर करथिले का सहित ग्रह सहित ओके सो गाइस प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ओके सो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और नेक्स्ट क्लास रे मु आर कहि देबे लिमिटेशन सब कोन थिला ओके जब त मानक वीडियो टी भल लागुची वीडियो को लाइक करिवो शेयर करिवो सब्सक्राइब करिवो आ ए कौशिक विश्वाल पर टिके विश्वास रखिवो ओके थैंक्स अ लॉट।